Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about TV channels chief medium of hate speech. तो ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पे कि let us try to do what can be taking over the powers of the legislature, and I think Vishaka is the best model he see. So यहाँ पे बोला गया है जस्टिस जोसेफ के द्वारा कि the most important point is where is our nation heading to, because आज टीवी एक टाइम में टीवी हम लोग सब देखते थे. Today the fellow citizens has reduced the amount of viewing TVs just because of the online forums, just because of the smartphones, okay, just because of this technology which is known as the internet of things. तो आज टीवी का डायरेक्टली एक हम लोग का जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि लाइक जो टीवी चैनल्स है आज, these are some of the chief medium of hate speech. तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है एक बेंच में. So this bench asked the government whether it is proposed to come up with a law to regulate hate content in the TV programs. And it said until a law is brought, it may consider placing guidelines on the lines of Vishaka. Okay. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं about the hate speech. तो यहाँ पे hate speech क्या है? See, according to the National Crime Records Bureau, we could see that any kinds of communication in speech, writing, behavior that attacks or uses derogatory or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of their religion, ethnicity, and nationality, race, color, descent, gender, or any other identity factors is directly can be termed as hate speech. तो वो हम लोग hate speech बोल सकते हैं. So now if I see about the regulations related to the hate speech, so today we have got various sections under the IPC which directly regulates and monitors the hate speech contents. Supposedly if I see about the section 295A of the IPC, it punishes any speech writings which directly insults citizens, religions, or religious beliefs with a fine as well as an imprisonment. Even the Supreme Court came up with various number of interpretations in various cases. पहला केस आया था रामजी लाल मोदी केस ऑफ 1957. ये पहला केस है जहां पे हेट स्पीच के बारे में बोला गया था. And its region it allowed limits on freedom of speech and expression for the sake of public order. Okay. तो उसके बाद भी we can see in various number of successive judgments, Supreme Court reiterated the concept of hate speech. Okay. So today you can see that going with these hate speeches also leads to various number of blasphemy. ठीक है, आज खाली इंडिया में हम लोग हेट स्पीच मानते हैं. इंडिया में वी कैन नॉट सी अ गुड नंबर ऑफ ब्लास्फेमी एक्टिविटीज, लेकिन ब्लास्फेमी लॉज कहां मौजूद है? ये कैन बी फाउंड इन सम ऑफ द इस्लामिक नेशंस सच एज पाकिस्तान, सच एज सऊदी अरेबिया, यूएई. वहां पे ब्लास्फेमी लॉज है. ब्लास्फेमी क्या होता है? अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव रिलीजन के अगेंस्ट में अगर कुछ तुमने बोला, देन इट इज कंसिडर्ड द ब्लास्फेमी अगेंस्ट बाय देम. So therefore we could see that blasphemy today, which generally prohibits the criticism of religion, is incompatible with the principles of democratic societies. So in a free and democratic society, there should be no scrutiny or disclosure of objections. So following a subtle line between the protection of faith and hate speech, the only viable solution to keep blasphemy in law and make it non-criminal is by some of the regulations associated with blasphemy as well as hate speech. तो यहाँ पे वही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप लोग एक रेगुलेशन लेके आइए, ओके, एक लॉ लेके आइए टू कंटेन द टीवी प्रोग्राम्स, क्योंकि आज टीवी प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? हेट स्पीच बहुत ज्यादा हो रहा है. सो इट इज डायरेक्टली द चीफ मीडियम ऑफ टुडेज हेट स्पीच. आज हम लोग चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, डिबेट्स पे देखते हैं, डिस्कशंस पे देखते हैं. तो वो डिबेट डिस्कशंस नहीं होता रहता है, वो कुछ और रूप ले लेता है. दे डायरेक्टली पर्सनली अटैक द अदर इंडिविजुअल who is directly the against party of some of its members. So therefore we could see that यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला गया है कि like you should come up with the various guidelines
सच एस यहां पे बोला गया है अबाउट द विशाखा गाइडलाइंस. Okay, so Vishaka guidelines, today we can see that it defines the sexual harassment in the workplace as an unwelcome sexual gesture or behavior, whether directly or indirectly. तो ये जो विशाखा गाइडलाइंस है, which directly Supreme Court gave a judgment that on the case of, ये कौन सा केस था, विशाखा केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस था 1997 का. ओके, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. Okay, in which the Supreme Court went on with various number of guidelines. और ये guidelines क्या क्या है, sexually colored remarks के ऊपर अगर कोई कुछ बोला तो it is a hate speech. Physical contact and advances के ऊपर बोला तो it's obviously a hate speech. Showing pornography, demand or request for sexual favors, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct that is sexual in nature is directly the guidelines of the Vishaka. तो therefore ये आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयर्स ऑफ बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट. तो ये केस ही था सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर. तो उसी के तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे बोला है कि टीवी चैनल्स को लिए भी आप लोग एक विशाखा गाइडलाइंस की तरह एक गाइडलाइंस या प्रोविजंस लेके आइए सो दैट वी कुड प्रिवेंट द मेनेस ऑफ दिस हेट स्पीच. ठीक है, तो ये था एक डिस्कशन अबाउट दिस हेट स्पीच. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. पूजा डिकम्पोजर. ये क्या है पूजा डिकम्पोजर? सी, recently this menace of stubble burning is directly going to rise just because the climate is there, the situation, the season is there where the farmers will be directly been moving towards the rabi crops. Okay, so we could see that puja decomposers are in the form of capsules. They are in the form of capsules and they are made by extracting the fungi strains that help the paddy straw to decompose at a much faster rate than usual. Okay, तो ये fungi क्या करता है? This fungi helps to produce the essential enzymes for the degradation process. तो अगर हम लोग पूजा decomposers use करें, that means it will help not to make a good form of stubble burning. जो लोग करते हैं, क्योंकि वे रेसिड्यू जो होता है उसी को बर्न कर देते हैं ये लोग ताकि नया वहां पे प्रोड्यूस कर सके. तो they go for stubble burning just because to make this residue burnt off. तो आज अगर हम लोग पूजा डिकम्पोजर्स यूज करें तो वहां पे रेसिड्यू जलाना नहीं होगा और अगर रेसिड्यू नहीं जलाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का पोल्यूशन लेवल भी कम हो जाएगा, घट जाएगा वहां पे. ओके, व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स इवन द हेल्थ and even in every forum of the areas of the northern belt just during this winter seasons. Okay, so this decomposer mixture which involves making a liquid formation using decomposer capsules and fermenting it for over 8 to 10 days. And uske baad it is directly sprayed on the fields where the crop stubbles directly lies behind. Okay, and it takes around 20 days for the degradation process to be completed. And under usual circumstances, if you see, okay, it takes around 45 days to decompose. So it does not give this period to prepare the fields for the wheat crop at that time. So iska benefits hai hum log, because the decomposers improves the fertility and productivity of the soil. And in the next crops, the lesser fertilizer consumption will be there. Also, it is very much of efficient, effective, cheaper, and practical technique to stop stubble burning, which is very much of eco-friendly in nature and environmentally useful technology which will contribute to achieve the Swachh Bharat Abhiyan. So therefore ये हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्थ फार्मर्स को, ओके, जनरली पंजाब के फार्मर्स को, हरियाणा के फनबोस को, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स को, उनको बोल रहे हैं अभी कि आप लोग पूसा यूज कीजिए, because through this you are directly saving some number of pollution, you are going in for some number of eco-friendlier items which will be more effective as well as efficient. ठीक है, तो ये पूसा डिकम्पोजर्स के ऊपर एक बात था. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. बिहार फ्री फ्रॉम नक्सल्स. ओके, नक्सलिज्म, what is it? It is a general designation given to several Maoist oriented and militant insurgents and separatist groups that have operated in India since mid 1960s. तो यहाँ पे एक लाइन बनता है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक सीधा लाइन कर दूं तो मैं यहाँ पे अगर सेंटर पॉइंट कहीं पे डाल दूं, ओके, सो व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज द राइट साइड एरिया सपोजिटली एंड दिस इज द लेफ्टिस्ट एरिया. ओके, जो पार्टीज का एफिलिएशन सेंटर है, जो कभी राइट होता है लेफ्ट होता है, उनको हम लोग सेंट्रिस्ट पार्टी बोलते हैं.
जो एक्सट्रीम राइट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दे आर डायरेक्टली मोर टुवर्ड्स द राइट। जो लेफ्ट होते हैं दे विल बी सम ऑफ द पार्टीज व्हिच आर लेफ्टिस्ट पार्टीज। ठीक है, तो इफ यू सी अबाउट द पार्टीज लाइक आप, बीजेपी, ये राइटिस्ट है और आप क्या है, लेफ्टिस्ट है। और अगर मैं एक्सट्रीम में चला जाऊं तो यहां पे आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट, ये सब आता है। माओइस्ट इज टोटली बैन्ड इन आवर कंट्री। ओके, और यहां पे आता है फंडामेंटलिस्टिक, ओके, फंडामेंटल ग्रुप्स, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इवन फासिस्ट भी अगर मैं बोलूं, फासिस्ट कहां पे आएगा, एक्सट्रीम राइट पे आएगा। सो इन दैट सेंस मैं ये क्यों बोल रहा हूं, because this party is, this naxalism is a concept of some of the socialistic ideas. Okay, here you can see that this naxalists directly think about that they will directly liberate their area from the very prudence of the government by use of some of the violence, by use or by taking arms against the state. Okay, so this naxalism in Bihar has got a huge history. See, naxalism in this area of Bihar, okay, it started back by the time period when like in say around 1968, when it experienced this naxalite flare up in an area called as Mushehari. Okay, Mushehari, okay, इस area में पहले start हुआ था बिहार, मुशहरी area में, which is a small block of around 12 villages. और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुजफ्फरपुर। ओके, मुजफ्फरपुर ये बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है फॉर नक्सलाइट मूवमेंट। तो मुशहरी एरिया में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, which includes some of the 12 villages, ये पहली बार आया था। And soon after it spread in other places of the state, some of the districts as we know today are center of this Naxalite activities. तो आज अगर मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट देख लूं, भोजपुर एंड नेक्स्ट वन इज रोहतस। ओके, सो भोजपुर एंड रोहतस में आज दो, ये कहां पे शुरू हुआ था, मुशहरी में शुरू हुआ था, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज we can see even Bhojpur and Rohtas districts have appeared as centers of Naxalite activities. So in this Bihar, this Naxalism went into the hands of the farmers, landless laborers, village school teachers. And the political line, however, was provided by educated youths, school teachers, and lecturers who translated works. Kiska works? The main kingpin of this Marxist-Leninism, माओ सन। और ये लिटरेचर था किसका, चारू मजुमदार का, who is directly categorized as a founding member of this Maoist organizations. And it was not their militant strategy and power of the gun, but the political work and education of the masses on political lines also prepared a force to directly challenge the feudal system in this country. But after emergence of the factors like Mandai, Mandir, globalization, liberalization, and also development in and within the different groups working in the name of Maoists, it now does not resemble that nationalism that flourished in West Bengal by the time of 1970s. Today, if I mention about Lalu Prasad also succeeded in stealing the issues raised by Naxalites, especially the issue of Ijjat. लालू प्रसाद किस लिए बना, लालू प्रसाद किस लिए उठ गए, इज्जत के कारण, डिग्निटी के कारण. And now we can see even Nitish Kumar rule of the last 5 years in Bihar further eroded the support base of Naxalism, that is the weaker and the deprived sections of the society, by including them in the scheme of things of development and growth of the state. तो आज मैं बोलूं अगर लालू प्रसाद यादव का हो गया या नीतीश कुमार जी का हो गया, तो इन दोनों का जो बेसिस फैक्टर्स था वो भी था कौन सा, इस नक्सलाइट्स के ऊपर जो शुरू हुआ था मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, उन्हीं का ही बेस था, उन्हीं का ही एक अकॉर्डेंस के हिसाब से ये लोग वही सब इश्यूज जो डाउन द रोड एंड बैकवर्ड सोसाइटी, उन्हीं का ही इश्यूज लेके ये पॉलिटिक्स पे. सो अभी क्या हो रहा है, अभी वी कुड सी दैट यहाँ पे जो नक्सल प्रेजेंस है वो ड्रास्टिकली कम हो गया. क्यों? जस्ट बिकॉज जो लोग उन चीज से प्रेरित थे तो आज वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है. ठीक है, एंड नाउ थ्रू सम ऑफ द वेरी लेजिटिमाइज्ड वे we can see the problems of Bihar is directly eliminated. So therefore we could see that यहाँ पे बोला गया है CRPF चीफ के द्वारा कि बिहार में नक्सल प्रेजेंस कम हो गया. They are in the and also they are in the last stage of Jharkhand, which is also a state of Bihar. लेकिन कुछ टाइम के बाद this Jharkhand state directly got separated out of the Bihar. तो आज झारखंड एक independent state है, and we can see that today we could see even in the Jharkhand it is also in the last stages. तो झारखंड में भी थोड़े दिन के बाद ये खत्म होने वाला है.
ठीक है, तो यहाँ पे वही इसका बात बोला गया है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द पेनिट्रेशन of the security in these areas through various number of operations, be it Operation Green Hunt, be it relief and rehabilitation policy, be it aspiration district programs, be it the opening of the Ekalabya model schools. तो ये सब के कारण we could see that in this areas the nexus directly slowed down. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब इश्यूज चल रहे हैं. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. चाइनास मुस्लिम सिटीजन्स. ठीक है, चाइना में जब मुस्लिम्स के बात बोला जाता है तो वहां पे मेनली एक ही नाम आता है, उसको वो हम लोग बोलते हैं उइगर मुस्लिम्स who live in the province of Xinjiang. Okay, so we know about the Chinese. Islam is directly practiced in China since 7th century, and Muslims are a minority group in China, and a great concentration of Muslims are in Xinjiang, which contains a significant Uyghur populations. China officially recognized 55 minority peoples. 10 of these groups are predominantly Sunni Muslims. तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है कि सिंस यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा भी as well as several European and Asian members also supported the cause that China यहाँ पे atrocities कर रहे हैं इनके मुस्लिम्स पे. Okay, the Muslims who are predominantly Turkish in nature. Okay, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो उइगर बोलते हैं हम लोग, this were basically Turkic ethnic groups whose origins can be traced from the Central as well as East Asia. Okay, and their native region is considered to be the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in the People's Republic of China. Okay, so therefore today they are facing a many number of issues associated with their language, associated with their culture. Because Uyghurs are Muslims and they don't speak Mandarin as their native language, and they have an ethnicity and culture that is different from that of mainland China. So today if you see that यहाँ पे जो sporadic violence हुआ है, यहाँ पे जो वायलेंस होता रहता है, यहाँ पे जो एट्रोसिटीज होता रहता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द इनसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज ऑफ द रिलीजन, ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेडिशन, ऑफ द रिस्पेक्टिव कल्चर ऑफ दिस मुस्लिम पॉपुलेशन. ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक न्यूज भी आ रहा था रिसेंटली कि इन लोग का जो एक इन लोग का जो मॉस्क है, ओके, चाइना इज रिमूविंग द डोम्स फ्रॉम द मॉस्क एज अ पार्ट ऑफ अ पुश टू मेक देम मोर चाइनीज. तो इनका जो मेन सेंट्रल डोम है, सेंट्रल डोम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डोम मिलते हैं, हम लोग को मिनरल्स मिलते हैं, ओके, एक इस्लामिक स्ट्रक्चर में. तो ये जो सेंट्रल डोम्स होते हैं, इस सेंट्रल डोम्स को रिमूव करने का बात बोला गया है. ओके, एंड वन वेरी फेमस मॉस्क इन चाइना व्हिच वाज डायरेक्टली बिलोंगिंग टू द 7th सेंचुरी, तो वहां से ये जो मॉस्क का जो डोम है उसको हटाने का बात चाइना बोला गया है, चाइना के द्वारा बोला गया है. ओके, एंड दिस मेड दिस पीपल डायरेक्टली वेरी मच ऑफ फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज चाइना में ये जो इस्लामिक जो ये है आइडियोलॉजी है, ओके, इसको डायरेक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है. सो देयरफॉर वी कुड सी दैट इन दिस सेंस वी कुड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि टुडे इन दिस एरिया, टुडे इन दिस एरेना, चाइना इज डायरेक्टली प्रेशराइजिंग द मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल, ओके, टू कन्वर्ट टुवर्ड्स देयर चाइनीज एथनिसिटी. ओके, और यहाँ पे जो भी, तो यहाँ पे इसको बोलता है, जो हम लोग बोला जाता है एक वर्ड के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं सिनीसाइजेशन. Sinicization मतलब you should be very much attributed toward Chinese. Okay, so in these areas of the Xinjiang provinces, जितने भी Chinese domes है, Chinese mosque है, उनका shape structures, जितना भी architecture है, वो architecture को Chinese के हिसाब से, Sinicization के हिसाब से उनको बदलाया जाए. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है कि लाइक चाइना के द्वारा उन लोगों को बोला गया कि पुट पेट्रियोटिज्म फर्स्ट, रिलीजन बाद में आओ. ठीक है, पुट पेट्रियोटिज्म फर्स्ट, चाइना टेल्स इट्स मुस्लिम सिटीजंस. तो पहले चाइना, तुम चाइनीज बनो, उसके बाद सोचना कि तुम मुस्लिम हो या तुम इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हो. क्या, पहले चाइनीज बोला करो, मैंडरिन बोला करो. तो वो सब यहाँ पे इन लोग के ऊपर प्रोपेल किया जा रहा है. ठीक है, तो वही क्या चीज के लिए यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी. Today, if I go with the national logistic policy of 2022, because recently the government has launched this policy aiming to achieve what? The quick last mile delivery and transport related challenges. तो ये logistic होता क्या है? Logistic encompasses planning, coordination, storing and moving resources, which may be people, which may be raw materials, which may be equipments, from one location to the other, from the production point to the consumption point, as well as the distribution point. So the term logistics describes the total process of controlling the acquisition, storage and delivery of resources to their intended locations. ठीक है, so today if I say about this policy, ये policy focus किस में करता है? This policy directly focus on the process of re-engineering, digitization and multimodal transport.
And today we can see that this national logistic policy is a crucial move, as it is very much like impacting the competitiveness of the domestic goods in the international market. And there is a need for a national logistic policy was felt, since the logistic cost in India is very high as compared to some of the other developed economics. Okay, so today if I see about the logistic cost, which have to be cut by half to a near global benchmark by 2030. And this could be by reducing the cost of logistic from around 14 to 18% of the GDP to the global base practice of 8%. तो आज जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है इन द ग्लोबल ट्रेड इन सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ये 8% है. हम लोग कितना कर रहे हैं? 14 to 18% कर रहे हैं. तो हम लोग का बहुत ज्यादा है. ओके, सो द करंट कॉस्ट is around 16% of GDP. 14 to 18% हम लोग का रेशियो है, लेकिन हम लोग का अभी कितना है? 16%. तो इसको आधा करना है, दैट इज 8% करना है हम लोग. तो वो हम लोग का मोटो है इन दिस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी. And thereby being the fifth largest economy today in the world, India aims to be among the top 10 in the LPI, that is the Logistic Performance Index. And ये कब का है? 2030 तक. 2030 तक हम लोग को बनाना है. Okay. Today in around 2018 में लास्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हुआ था, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 44th इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है, तो इसको हम लोग उठा के हम लोग को टॉप 10 में आना है. कब तक? 2030 तक. हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं है. Okay, because we have directly made this policy very much of significant, so that it could directly alter such number of cost cutting in this logistic policy. Okay, so therefore we can see there are various initiatives also that are related to logistics. Supposedly about, if I say about the PM Gati Shakti scheme, okay, which will get further boost and complemented with the loss of this national logistic policy. Okay, इसके बाद जो dedicated freight corridors है, okay, between Bombay to Delhi. So it is Eastern Freight Corridor, Western Freight Corridor, ये सब है. Then the Sagarmala project, Bharatmala projects, multimodal logistic parks. तो ये सब क्या है? These are all a part of this national logistic policies. Okay, so therefore today we can see that in every forum it is very good time to give wings to this logistics sector, and even thinking about the air logistics also. हम लोग ने रास्ते से सोच लिया, ट्रेन से सोच लिया, पानी से सोच लिया, तो हम लोग एयर लॉजिस्टिक्स को भी हम लोग को अभी फोकस करना चाहिए, बिकॉज इट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम ऑफ द हाई वैल्यू एज वेल एज पेरिशेबल आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, व्हिच विल आल्सो कट द कॉस्ट ऑफ द मार्केट सिस्टम. ओके, तो ये था अबाउट द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी. ओके, चलो लास्ट में आते हैं, द एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड द वेजेस ऑफ ऑब्लिवियन. Okay, so today if you see about this discussion made by Hamid Ansari, the former Vice President of India, around 2007 to 2017, 10 साल तक उन्होंने रहा है. तो आज अगर मैं फ्रेटर्निटी के बारे में बोलूं, which is means by brotherhood, okay, brotherhood, okay, और ऑब्लिवियन मतलब क्या है? मतलब मान लो कि एक आसपास तुम्हारा कुछ चल रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है. ठीक है, तो that is known as ऑब्लिवियन कैरेक्टर. ओके, आसपास मेरा कुछ हो रहा है लेकिन मेरे को कुछ पता ही नहीं. कोई मेरे को पूछ दिया कि अरे तुम्हारे आसपास क्या हो रहा था, बोला कि मेरे को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा था. तो दिस इज नोन एज ऑब्लिवियन. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हेन आई से अबाउट फ्रेटर्निटी, तो ये फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ पे आता है हम लोग का? इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into sovereign socialist, ये सब जब बोलते हैं, उसके बाद हम लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, उसके बाद हम लोग बोलते हैं एंड टू प्रमोट अमंग देम फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो फ्रेटर्निटी के बाद यहाँ पे बोला गया, so these principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items as in a trinity, because they forms a union of this trinity. और ये किसने बोला गया था? ये बोले गए थे डायरेक्टली बी आर अम्बेडकर साहब ने इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. And Dr. B. R. Ambedkar Sahab defines fraternity as a sense of common brotherhood and sisterhood among all Indians. Okay, so therefore the responsibility of an individual citizens is to be very much of rational with some of the remarkable foresightedness. Okay, today you can see that even Article 51A directly says about the fundamental duties, and thereby it is directly a duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of commonhood, irrespective of linguistic, regional or sectional diversities. Okay, significantly we can see that the responsibility for bringing this about does not rest with the state, but it seems to be the responsibility of the Indian citizen to make this fraternity very much in this respective society. But today we could see an aggravating factor which is often overlooked in the shape of that inequality takes in different segments of our society.
be it in economical forum, be it in regional forum, be it in caste sectors, be it in religious sector, सब में हम लोग का inequalities है. And even we can see that sociologists have identified various categories of people who are determined to be socially or politically or economically excluded. And some of the peoples who are partially include the Dalits, Adivasis, women's, and some of the religious minorities. So therefore, today, the primary concern of the constitution makers was related to the cohesion and integration of the units of the new republic, formerly described as the Union of States. But we could see that the integration on the minds of the people directly made us a union of states. Okay, so today, the fraternity in present times can be seen as an uneven development which has characterized the states of the Indian Union, regional and linguistic diversities. And so does uneven economic development and progress, which results in various number of unemployment, social cohesion, and containments. Right after 75 years of independence even, if we get a candid assessment of the state of the republic, we could see that still today, after 75 years of independence, the regional diversity remains. The assertion of the linguistic identity remains. The emergence of a diverging political orientation remains. So therefore, over here, we need to term fraternity to a sense of brotherhood, as well as an emotional bond with the country and its people. So here we need to cultivate what? The sense of this brotherhood and sisterhood in order to truly realize Azadi Ka Amrit Mahotsav. Without realizing someone to be our brother, someone to be our sister, we cannot directly achieve the real goal of our constitution, which is directly going with the fraternity. तो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग कब पाल सकते हैं? कब हम लोग का रियलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा? जब हम लोग सब एक दूसरे को एक ही नजरिया से देखें. So that we should not have any form of diversity, so that we should not have any form of discrimination. तब जाके हम लोग का होगा क्या? आजादी का अमृत महोत्सव. तो उसी के बारे में यहाँ पे फ्रेटर्निटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया जा रहा है. ठीक है, आप अपना एक्स वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है, so this is all about today's analysis. So we have got the 5 MCQs, so you can kindly attend these MCQs and can send it to us. Okay, also we have created a WhatsApp group for us. Okay, you can find the link of this WhatsApp group in the notification that is directly below. Okay, so join our Telegram channel also the WhatsApp group, where you will directly get update of our various CA capsules, okay, and all the type of PDFs in very much free. Okay, so you have also got one mains question, so do attempt it and send it to us. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.